Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSIR Net Mathematics. Today I will explain you how you can solve the linear algebra problems. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various lectures related to the complex analysis, real analysis and many more lectures in this playlist. I am very sure that if you watch this very carefully, all are with the help of the fully shortcut tricks, then you can easily crack any of the examinations within a couple of months. So let's start with the first question. Always remember my target is to get the answer within the 1 minute time periods. Now if you read the statement, which of the following statement is not orthonormal? So do you know what is the property of the orthonormal? If I say my pair A comma B is said to be the orthonormal when if the dot product will be 0, and the second property must be the norm of A and norm of B must be 1. Fine. So we will see about this first part. Dot product of this 0, that's A, this is B and C. So my target is to prove A dot B 0, A dot C 0 and B dot C 0. So let's start with the first one. A dot B 1 by root 12, 0, 0 minus 1 over root 12 satisfied. A dot C 0, 0, 0 satisfied. B dot C 0, 0, 0 satisfied. Can you calculate the norm of A? It is half plus half satisfied. Norm of B 1 over 6, 2 over 3, 1 over 6 again satisfied. Norm of C also satisfied. So yes, this is the orthonormal, but we need a not an orthonormal. Look at the second one, A, B and C. A dot B 1 minus 1 by root 12, 0, 0 plus 1 over root 12 satisfied. B dot C satisfied, C dot A satisfied. Again you can see in the norm is already satisfied. Look at the third options. A dot B, it's a minus 1 over root 12 plus 0 minus 1 over root 12, which is not 0. So that means this is not the orthonormal. Look at the last one. It's a 1 by root 12. It's a 0, 0 minus 1 by root 12 satisfied. 0, 0, 1, 0 satisfied, satisfied. Norm is also satisfied. So the right answer is C is my correct answer. Okay, look at the second one. Again, you can see this is the matrix. Fine. How you can solve with my approach? अगर आपने बच्चों ये सारी वीडियोस देखी हैं तो मैं हर वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करता हूँ लीनियर अलजेब्रा को. जब भी आपको मैट्रिक्स दिखाई दे जाए, ऑलवेज यूज दी ओनली इज आइगन वैल्यू. कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आपको मैट्रिक्स दिखाई दे जाए, ओके, और मैट्रिक्स का वर्ड दिखाई दे जाए, हमेशा आइगन वैल्यू से सॉल्व करिए. So पहले आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं. Check whether the row sum is 1, 2, 3, 4, 4. No, row sum are not same. So let's start with the eigens value. 1 minus lambda 1, 0, 1, 2 minus lambda 1, 1, 2 minus lambda is my 0. So can you find the eigen value? It is 1 minus lambda into 2 minus lambda square minus 1 minus of 1, 2 minus lambda minus 1 is 0. So I can take 1 minus lambda is common. It is my 2 minus lambda square minus 1. You can see it is my 1 minus lambda. I can take 1 minus lambda common. It is my 0. So that means one eigenvalue is my 1. And from this case, 2 minus lambda square is equal to 2. The value of the lambda will be plus minus root 2. Fine. Now you can see all these eigenvalues are my real and distinct. Once they are real and distinct, A has only real eigenvalue, correct, but not diagonalizable. But all the eigenvalues are distinct. Yes, this is a diagonalizable over the R. One of the eigenvalue is not real. That's not true. All the eigenvalues are my real. Once you can see the eigenvalues are my real and distinct. What does it mean? The matrix is my diagonalizable.
So that means you can find the invertible matrix P definitely. So there exists invertible matrix P, there exists invertible matrix P. Fine. Fine. Now, how you can see the eigenvalues are my 2 plus root 2, 2 minus root 2, such that P P transpose of P is I, or P or P transpose is not equal to I. Fine. Very simple. What are the eigenvalues of the I3? 1, 1, 1. So if I check whether the eigenvalues of P transpose P is 1, 1, 1 or not. So these are the eigenvalues of the P. Eigenvalue of the P transpose is also same. Fine. So what is the eigenvalue of the P transpose into P? So I can multiply them. It's a 1, 2 plus root 2 into 2 plus root 2, and 2 minus root 2 into 2 minus root 2. So that will be 1. It is 4. 4 plus 2, 6 plus 4 root 2, and 4 minus 6 minus 4 root 2. Clearly say they are not equal to 1, 1 and 1. So that means the P transpose of P is not equal to I of 3. So the right answer of the problem is B is my correct answer. हमेशा याद रखिए बच्चे, हमेशा जब भी आपको एक मैट्रिक्स का सिंगल वर्ड भी दिखाई दे जाए आइगन वैल्यू से ही सॉल्व करिए. अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, आप यू कैन वॉच अबाउट माय दीज प्रीवियस लेक्चर्स. You will see I have solved every questions of the linear algebra. You can watch my this lecture, last minute revision of the linear algebra. आप कहेंगे कि सर हर क्वेश्चन मैं लीनियर अलजेब्रा का सॉल्व कर लूंगा. एक बार देखिएगा, फिर आप कहेंगे सर कि इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, लुक एट दिस वन अगेन. यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है. कैन यू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स? It's a very simple because all are my 0. So what are the eigenvalues? First value, last value, plus minus, product of the first value, last value, comma. There is only one value that will be here. Can you find the eigenvalues? It is a plus 1, it's a minus 1, it's a plus 1. Fine. These are the eigenvalues of the matrix A, Now your target is to find the B of this. So let's start with the first part. What is the value of the B of VV? That is V transpose A of V. What does it mean? This is my quadratic form. Fine. Moreover, the matrix A is my symmetric matrix. So I will solve this question by the two methods. First method is with the help of the eigens value. It's a quadratic form and the matrix A is my symmetrics. So you all know whenever you have the x transpose AX is equal to 0, because we need a 0. This is 0 if and only if A is my positive definite matrix. Fine. So when A will be the positive definite matrix if the eigenvalues are my greater than 0. But you can see the one of the eigenvalue is not greater than 0. That means this is 0 if and only if V is equal to 0 is not satisfied. This is only this, and if and only if x is equal to 0. ये तभी होगा अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी. बट आइगन वैल्यूज, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज माई नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट वैल्यू तो हुई नहीं, तो इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा. फाइन. तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. एक और मेथड है, दिस द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड क्या है? अगर आप आइगन वैल्यू से नहीं करना चाहते, चॉइस आपकी है. फाइन. मैं आपको अलग अलग मेथड बता सकता हूं, चॉइस आपकी है, लेकिन एक ही मेथड से प्रैक्टिस करेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट. चलिए सबसे पहले मैं इस वैल्यू को निकाल देता हूं अभी, v ऑफ v, क्योंकि ये स्केयर मैट्रिक्स है आपके पास. फाइन. तो ये अगर मेरा v1 है, v2 है, v3, v1, v2, v3, तो ये कितना हो जाएगा? v1 इंटू v3. फाइन. ये v2 इंटू v2 एंड v3 इंटू v1. तो ये बेसिकली क्या हो गया? v3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v3. Now as per the given statement this value is 0. Is this implies v1, v2 and v3? This is basically v is my 0. No. Why? Because if you simply choose v1 is my 0, v2 is my 0, v3 is my 1, so clearly say this number is 0,
but this number is not my 0. तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. ओके, नाउ look at the second option. For every value of lambda, for every value, so let's say lambda is my 1, v of v, that is v2 square plus 2v1 v3 is my 1. For every value of lambda there exists a v. So is it possible? So can you find the v1, v2 and v3 so that its answer will be 1? Yes, you can choose v2 is my 1, rest two numbers are 0. Fine, so this is satisfied. Or in general, if I say this number is my lambda, can you choose the three numbers? Of course you can. I can choose the v1 is my lambda over 2. Fine, v3 is my 1 and v2 will be my 0. Fine, so you can see there exists a v. This is my v and it belongs to the real. So yes, the second option is the correct option. Okay, look at third one. Third one, we needed a b of w, b and w. So that means this is basically w1, w2, w3. So this number is v1, w3, v2 square and v3, w1. So look at that. For every v which is non-zero, the easiest one I can choose as, fine, this is my non-zero. So therefore, what is the value of the v? So that is a v1 is my non-zero. So this number is my v3, sorry, w3. This is my 0. This is my 0. Such that this is 0 for all the w. That's not true. If I choose 1, 0, 1, so which is my w? But this implies this number is my 1, which is non-zero. So therefore, this option is also cancelled. Look at the last one. B of vw is my 0. Then either v is 0 or v is non-zero. Same example you can see. This is my v is non-zero. W is my non-zero. Fine. Sorry. In this case, we need a vw0. So I can choose. Fine. V is my 1, 0, 0. W is my 1, 0, 0. What is the value of the b of vw? You can see 0 into 1 into 0, 0. So that will be 0. But none of them is my 0. So that option is also cancelled. B is my right answer of this problem. Okay, look at this another one. V is the vector space T1. V is the vector space over R. So we never know the dimensions. Okay, so T1 is a mapping from V to V. So V is a vector space of the dimension. So I assume the dimension is my 2. Then T1 is my 2 cross 2 matrix. T2 is also V to V. This is also my 2 cross 2 matrix. If I assume the dimension is my 2, such that T1 plus T2 and T1 minus T2 are Li. So they are given to you. Then which of the following statements are my correct? The individual transformations are Li, or there exists a linear transformation T3 and T4 from the V to V such that they are my Li. I think this option is correct because the T1 and T2 are my Li's. So once they are Li, you can easily extend the space. You can easily take on the space. That means you can easily extend it the basis. Fine. So once you can extend it the basis, they are basically the Li's. So yes, they are my Li. So B is my correct statement. So B is false. D option cancel. A option cancel. Fine. Now the first option is you have to prove T1 and T2 are Li. So basically your target is to prove alpha 1. If you start from here, your target is to prove alpha 1 is 0, alpha 2 is 0. Fine. It is given that T1 plus T2, T1 minus T2 are Li. So if I multiply with by, what does it mean? If I start from here, this implies C1 is 0, C2 is 0. That's the definition of the Li. Fine. Now, if I write in the other way, say T, this is my T1 plus C1 minus C2 of T2.
is 0. Now if you compare them, your alpha 1 will be C1 plus C2, alpha 2 will be C1 minus C2, but the value of the C1 and C2 are 0. That means alpha 1 is 0, alpha 2 is 0, and that's my target. So therefore T1 and T2 are Li. Yes, this option is also correct. So the both, that is the C option, is my right answer of this problem. कितना आसान है, सिर्फ अगर आपका रिएक्शन उफ था, सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखकर काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आई एम वेरी श्योर दैट नाउ योर रिएक्शन विल बी वाव। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा रहा इन पहले 3 क्वेश्चंस के ऊपर? 1 2 3 4, पहले 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपका रिएक्शन क्या था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैपिटल T is the matrix from R4 to R4. That means capital T is my 4 cross 4. Again is a matrix, so I can solve the problem with the help of the eigens value. तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की 4 आइगन वैल्यूज आएंगी। फाइन, सच दैट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन। सो पहले तो ये सोचिए इन दोनों में से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो सकती है। अगर इसका डायमेंशन का साइज 4 क्रॉस 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो टी की बनेगी उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री तो 4 ही होगी। बट अगर आप पहली इक्वेशन को देखो, दिस इज नॉट ए 4, द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 3 while the second polynomial is of degree 4. So what does it means? The first one is my minimal polynomial while this one is my characteristics polynomial. Fine. Now based on the characteristics polynomial, can you find the eigenvalues? Yes, you can see this is lambda square plus lambda plus 2 is my 0 and lambda square minus 4 is 0. So from this case your eigenvalues are my 2 and minus of 2. From this case you will get the eigenvalues as my negative or complex numbers, 1 minus 8 over 2. So that means minus 1 root 7 iota divided by 2. Eigenvalues are my, these 4 are my eigens values. Now clearly say these eigenvalues are my complex numbers and are distinct. Fine. So therefore they are my diagonalizable over C only. Is it okay? But he said T is my diagonalizable over R. That's a wrong statement. Characteristics polynomial of the T, you can see lambda square or x square plus x plus 2, x square minus 4. That's a correct. Is this the characteristics polynomial? No, because if you open this bracket, the last component must be my 16. That is the determinant. Determinant of the T will be 16 if this is my characteristics polynomial. But you can see from here the determinant from the eigenvalues. From the eigenvalue is my minus of 8, but it is a 16, so that is not possible. Look at the last one. Whether for every R linear transformation ST is equal to TS, that is commute. Fine. When it will be commute, remember always, if your matrix T is diagonalizable over the R. Fine. If it is diagonalizable over R, then you can write always as a linear, you can always write as this way of the eigenvalues, or you can write as a scalar multiple of the identity matrix. But since this matrix is not diagonalizable over R, it is only for the C, so that means ST is equal to TS is not always true. For example, I will tell you the simple one. You can see I can simply take that 2 by 2 example. One is a 1 iota, say 0 and 0. Fine, say this is my S, and I can choose, or you can say this is eigenvalues are T, and S I can choose as 2 and 3 0 0. Fine, and if you compute the TS and ST, you will see that they are not same, or I can simply choose 10 30 10 20. You can see these values are not same, so therefore the right answer is only C is my correct answer. If it is a diagonalizable over R, then you can write as a linear combination, then we can think about that. But this matrix is not diagonalizable over R, then there is no need to think about the commute matrix.
Okay, look at this another one. Again, this is related to the matrix. So I can solve the problem with the help of Eigen's value. अगर आप देखो दिस है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और ये सेम सोल्यूशन मैं ऑलरेडी भी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्सप्लेन कर चुका हूं. फाइन. एनी हाउ बिकॉज ये क्वेश्चन मैट्रिक्स क्या है तो आइगन वैल्यू से सॉल्व करेंगे. देयर आर द थ्री आइगन वैल्यूज बिकॉज द साइज इज 3 क्रॉस 3 सच दैट a क्यूब इज माई आइडेंटिटी. इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 1 1. तो इसका मतलब a की आइगन वैल्यूज क्या आएंगी. a की आइगन वैल्यूज आपको ऐसी आइगन वैल्यू सोचनी है जिसकी आंसर 1 1 1 आए. तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. या तो ये तीनों ही 1 1 होंगे. फाइन. और या तो ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होगा. क्यों. क्योंकि अगर इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ओमेगा क्यूब इज अगेन 1 ओमेगा पावर 6 अगेन 1. और कोई पॉसिबल ये भी तो हो सकता है ओमेगा 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 क्यूब 1 1 1. फाइन. और ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है. ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भी हो सकता है. दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ओमेगास आर देयर. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर माय ट्रू. सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ द a इज x क्यूब माइनस 1 होगा कि नहीं. बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आपने लैम्डा सारी वैल्यूज 1 ले ली दैट मीन्स आपकी a आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है a माइनस ये तो होती है that is a characteristics polynomial, but he said characteristics polynomial is x cube minus 1. That is a wrong statement. a has at least two distinct eigenvalues. That's again a wrong. अगर आपने a को i ले लिया तो eigenvalues क्या आ रही है आपकी 1 1 1 and two eigenvalue distinct होंगी कोई गारंटी नहीं. फाइन. मिनिमल पॉलिनोमियल कैन नॉट डिग्री 2 मतलब डिग्री 2 कब नहीं होगा लैम्डा माइनस ए लैम्डा माइनस बी मिनिमल पॉलिनोमियल. फाइन. वेरी सिंपल अगेन यू कैन सी ये केसेस हमारे बने थे. अगर तो सारी आइगन वैल्यूज 1 1 है दैट इज ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी a माइनस आई ही बनेगी अकेली. फाइन. तो इसकी तो डिग्री 2 नहीं बनी बट इस काउंटर एग्जांपल से आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. ऑल द आइगन वैल्यूज आर माय डिस्टिंक्ट. फाइन. तो इसका मतलब ये तो आपका डायगोनल हो जाएगा. तो मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर सेम आएंगे. इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी डिग्री इसके 3 हो जाएगी. तो ये भी ऑप्शन को कैंसिल कर देगा. बट अगर आप इस वाले केस में देखिए आप इसमें आइगन वैल्यूज आपकी क्या बनेगी पॉलिनोमियल क्या बनेगा लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड क्लियरली से दिस नंबर विल बी 0 बिकॉज अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा ओमेगा प्लस इसको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा. दिस इज माइनस प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 होता है. दिस नंबर इज माई माइनस 1. फाइन. सो दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 विच इज द फैक्टर ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स दिस मस्ट बी 0. तो इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गई आपको. अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है डिग्री 2 बट ये कह रहा है कैन नॉट बी द डिग्री. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल आउट. फाइन. अब पहला ऑप्शन की बात करते हैं ये पहला ऑप्शन सही क्यों है. फाइन. चलिए अब सारे केसेस को डिस्कस करते हैं. अगर a आपका आइडेंटिटी है तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल. तो पहले ऑप्शन से तो करेक्ट हो गया. इसमें क्या कह रहा है ऑल द आइगन वैल्यूज आर माई डिस्टिंक्ट. अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो डायगोनल होगा ही होगा. अगर इन दो केस में देखें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओमेगा कितना है 2. फाइन. तो आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी आइगन वैल्यूज क्या है आपकी ओमेगा 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 स्क्वायर. फाइन. तो मैं इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल देता हूं. अगर वो 2 आ गया आपके पास तो इसका मतलब डायगोनल हो जाएगा. तो इससे 0 0 0 0 0 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. यही तो होता है ना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स rank is my 1 so that will be 3 minus 1 is 2. So geometric multiplicity is 2 algebraic multiplicity 2 that means this is diagonal. Similarly for this case so yes A is my right answer of this problem. हमेशा याद रखिए बच्चे जब भी मैट्रिक्स आए आइगन वैल्यू से सॉल्व करिए.
आप मोर डिटेल्स के लिए आप ये लास्ट मिनट वाला लेक्चर जरूर सुनिए, लीनियर अलजेब्रा, और आइगन वैल्यू का लेक्चर सुनिए, 55 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। मैट्रिक्स का क्वेश्चन सुनिए, आइगन वैल्यू से सॉल्व करा जा रहा है, 50 प्लस क्वेश्चन इस लेक्चर में है। आराम से सुनिए, एंजॉय करिए और क्रैक करिए सारे एग्जामिनेशंस इजी वे में। कृपया कमेंट करके बताइए कितना मजा आया आपको इस वीडियो में भी। आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद द अदर फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वाड्रेचर फॉर्मूला है डिग्री ऑफ द प्रिसीजन आपको निकालना है। क्या होता है डिग्री ऑफ प्रिसीजन? मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड सॉल्व करने के लिए। डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या होता है? आपको एक पॉलिनोमियल निकालनी है x की पावर k की, और k इज माई प्रिसीजन, सो k इज माई लार्जेस्ट वैल्यू। आपको लार्जेस्ट डिग्री निकालनी है और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k निकालना है, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। बस दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। पहले शॉर्टकट ट्रिक से बता देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिमिट से इस -1 to 1, आपको कुछ याद आ रहा है? ये आपका f of a f of b डिवाइडेड बाय 2 है फ्रॉम a to b। ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास? दिस इज दिस इज अ ट्रेपेजोइडल रूल, और ट्रेपेजोइडल रूल में आपके पास उसकी कन्वर्जेंस क्या होती है? लीनियर। सो दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर। फाइन। एनी हाउ, सेकेंड मेथड से चलते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं याद रहा क्वाड्रेचर क्या है, सबसे पहले k की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो f क्या हो गया आपका? 1। तो चेक करते हैं इसमें फिल करके वेदर दे सेटिस्फाइड इक्वेशन और नॉट। तो ये क्या हो गया? mod x विच इज इक्वल टू हाफ f of -1 is 1, f of -1 is 1। इट्स ए इवन फंक्शन, तो मैं इसको ट्वाइस करके लिख देता हूं, 0 से 1 x dx, और आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो -1 से 0 और 0 से 1। 0 से 1 में ये पॉजिटिव है, इसमें ये -x है, राइट साइड पे कितनी होगी? 1। सो क्लियरली से अगर आप इसकी इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा? x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी आएगी? फ्रॉम 0 to 1 इज 1, सो सेटिस्फाइड। आप इससे भी करोगे सेटिस्फाइड, तो ये 0 तो आपका पास हो गया। अब 1 पे चेक कर लेते हैं। अगर k आपका 1, बिकॉज आपको लार्जेस्ट चाहिए, अगर k 1 है तो आपका f कितना हो गया? x। तो इसमें फिल करते हैं -1 to 1 mod x into dx which is half -1 plus 1। फाइन। अब देखो ये फंक्शन आपका क्या है? इट्स अ ओड फंक्शन। अगर ओड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो इधर से भी आपको 0 मिल गया। तो इसका मतलब आपके पास पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज आपको एक वैल्यू और मिल गई k की भी। लास्ट ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अगर k आपका 2 है तो आपका f क्या होगा? x स्क्वायर। तो इधर फिल कर देते हैं -1 to 1 mod x स्क्वायर, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या आंसर हो गया? -1 पे 1, इस पे भी 1। ये फंक्शन आपका इवन है, तो इसको मैं डबल करके लिख देता हूं, सो इट विल बी माई x क्यूब। राइट साइड पे आपका आंसर हो गया 1। इसको सॉल्व करते हैं तो x4 by 4, फाइन, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इधर से हाफ आएगा, हाफ इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब 2 पे नहीं सेटिस्फाइड होगा, 3 पे भी नहीं होगा। इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इज माई b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। So this is the way you can solve this question in a very simple manner. उम्मीद करता हूं आप वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड कमेंट करोगे। Very soon I will upload the next video very soon. Till then you can subscribe my YouTube channel. Best of luck students. Happy.